Hello students, so we will be discussing your today's topic, which is your solutions. Hi Rahul, hi Harshit. So this session will be less of a practice session but more of a theory actually, because you have to cover your course. So some questions I have kept, but mostly it's a theory session. Okay, less practice, more theory, but some few practice questions are there anyway. Okay, so let's start. Okay, the first concept which we will learn today is, so last class we had learned regarding your Raoult's law for a binary solution. Then we had learned regarding various forms of concentration. Okay, so we will continue that today. Okay, so today we are starting with effect of non-volatile solute on vapor pressure of solutions of solids in liquids. Okay, so what do you mean by non-volatile? Non-volatile means it it's like a, okay, like it has a relatively higher boiling point, that is non-volatile. Okay, volatile means relatively lower boiling point. Okay, so if you add a non-volatile solute, so let's say you are adding salt to water, so you make a saline water solution. Okay, so salt to water, if you add, what happens? So let's imagine these yellow particles, they are your salt particles. Okay, so what happens is they go into the solution. Okay, they go into the solution and they sort of block the surface. Okay, if surface is blocked, these blue particles, which are your solvent particles, so what happens, so when vapor pressure is basically sum of the liquid, it converts into vapor phase, some of the vapor phase converts back into liquid, so it does the equilibrium. So the rate of change of liquid to vapor is equal to rate of change of vapor to liquid, but the equilibrium is favoring the liquid phase below the boiling point. Okay, but if you are adding solute particles, they block the surface. So when they block the surface, less solvent particles can go into the vapor phase, thus it will reduce your vapor pressure. So whenever you add a non-volatile solute, and again generally solid solute which has a relatively high boiling point, like your salt NaCl, so when you add that, your vapor pressure will reduce. So you can see here there is a instrument sort of like a barometer. So you can see initially the reading was 2. Okay, okay, but as the solute started mixing in the solution, the reading became less than 2. So the vapor pressure reduced when you added some solid solute which is non-volatile. Okay, so that is the effect. So it lowers the vapor pressure, the solution's vapor pressure, P of solution is less than P of pure solvent if non-volatile solute is added. Okay, so we will continue. Mathematical expression of vapor pressure of solution containing non-volatile solute. Again, non-volatile solute is a solute which, like NaCl, has a higher boiling point, relatively higher boiling point. So and relative to the solvent, the solvent has a lower boiling point, so NaCl's boiling point is way higher than water's boiling point. Okay, so if you take so your Pa, okay, mathematical expression for vapor pressure solutions vapor pressure, Pa is proportional to mole fraction of the solvent. Xi A is your mole fraction of the solvent. Okay, now if you equate, okay, so if you equate it, so the constant here will be Pa equal to P naught A into xi of A. Okay, so xi of A is your mole fraction of solvent, this is your mole fraction of solvent, okay, and P naught A is vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent,
and PA is your vapor pressure of solution. Okay, so these are 3 terms. So if you have, hi Harshit, so if you have a non-volatile solute, this NVS is your non-volatile solute, which is soluble in a solvent. Then pure solvent, P equal to P naught A. P naught A is the vapor pressure of pure solvent. Once you add that solute, the mole fraction of solvent reduces. Okay, so when mole fraction, because total mole fraction is what, X A will be equal to Na by Na plus Nb. Okay, initially it was only Na by Na, as there was no solute present. So it was maximum, which is equal to 1. Mole fraction is maximum value of mole fraction can be 1. But once you added this Nb, which is the number of moles of solute, the value of Na reduces. And I just showed in the previous slide कि आपका जब solute आ जाता है solution में, वो block करता है solvent particles to go into the vapor phase. So this math actually proves that relation. Again, experimentally proven, and mathematically this is the relation. Again, by experiments. Here P naught A is your constant. So initially PA is proportional to xi of A, and P naught A will be your constant here. Okay. So we'll continue. Okay. Okay, here there is a wrong relation actually. P is not less than P dash. So here P dash is your vapor pressure of your solution. Okay, but we know when you add a solute which is non-volatile, it reduces the vapor pressure. So original vapor pressure was P naught A, which is equal to P. This relation is actually P is greater than P dash. Okay, because xi of A is less than 1. So when you multiply P naught A into xi of A, which is a value less than 1, your P dash will be less than P. Okay, so there is an error here. Then this curve you can see vapor pressure with relation to mole fraction of solvent. At 1, this point will be vapor pressure of pure solvent. So this will be P naught A. Okay, and all these points are your PA. Okay, so this value will be equal to P naught A into xi of A. So depending on the mole fraction of solvent, your vapor pressure will increase or decrease. For PB, you won't have a PB here, Harshit. PB won't exist because okay, PB okay, like PA would only is your concern. Okay, for PB I think is not in your course. Okay, anyway I will check and see you next class. Okay, so what happens to PB, because just remember, even solids they also have a vapor pressure. Okay, they also have a vapor pressure. So what will be the effect on PB, or are we approximating PB to be 0? I will check and tell you in the next class. Okay, so next class we'll have on next Saturday. So I'll tell you what is the value of PB, what is PB, or does it even exist, or we are approximating it to be 0. So I'll check and tell you. Okay, so I have to check a few things, because solids, remember, also have some vapor pressure. We will learn today depression of freezing point. There we will see solids actually have a vapor pressure, where like they also have it. There is a value, it's not 0, there is certain value. So now we come to types of solutions. So when last class we had learned about Raoult's laws, like formula for ideal mixture, like solution containing 2 liquid portions. Okay, so we had come to the conclusion P total. So last class we had come to the conclusion P total equal to P naught A into xi of A plus P naught B into xi of B. Okay, so if you have liquid mixture of 2 components, and one is a solute and one is a solvent, solute being the liquid portion which is in lower quantity, solvent being the liquid portion which is in higher quantity, total vapor pressure will be the contribution of individual vapor pressures. For a pure solvent pure A, vapor pressure will be equal to P naught A.
for a pure solvent, pure B, vapor pressure will be equal to P naught B. But if you mix both of them, you will have this value. Okay. Now for ideal solution, so ideal solutions are solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as ideal solutions. Okay. So example of ideal solutions are N-hexane and N-heptane, bromoethane and chloroethane. So basically they obey the Raoult's law over the entire range of concentration. So PA, PV values, entire range, if they follow, they are told to be ideal. But so approximately ideal few solutions exist. Okay, N-hexane, N-hexane and N-heptane, they are approximately ideal. Bromoethane and chloroethane, they are also approximately ideal. So for ideal solution, your solution when you will mix, okay, there is some heat released, that heat is equal to 0, and if you mix mixture's volume, that is also there is no change in enthalpy, you can, yeah, approximately these solutions are ideal. In reality, I don't think any solution is perfectly ideal, they are approximately ideal. So you can remember it: N-hexane, N-heptane, bromethane, chloroethane, benzene and toluene. Okay, just remember an ideal solution when you mix these two. So if you are forming an ideal solution or near ideal solution, you won't the mixture won't become hot or it won't become cold, or the volume won't increase or the volume won't decrease. If they are following these 2 points, then they are said to be ideal. Okay, basically if you have two components A and B, so there's A and B interactions will be same, strength of A and B interactions will be same as that of AA and AB. Okay, because the interactions or the attraction forces between the particles of A and B, they are same as that of AA and AB. So you will say your mixture is ideal. Okay, so these are the 3 conditions which they follow, ideal solution follows. Okay, you can remember this, they are near ideal. I don't think any solution is perfectly ideal, so they are almost ideal, like approximate to be ideal. Okay, so I hope this is clear for everyone. Harshit. Okay. It is clear, I'll continue. Okay. Okay, so we continue. Characteristics of ideal solution: enthalpy of mixing of pure components to form. So basically what I explained in the last class, last slide. So this A and B, they are the interaction forces of attraction between A particles and B particles. So if the particles, like AB interactions, are as strong as A and BB interactions, then you will say the solution is ideal. Okay, this one I've explained last slide. So we have a question. So Harshit, you can type in the chat, and people watching through our platform, they also can attempt this question. The question is, which one of the following is not correct for an ideal solution? Okay, which one of the following is not correct for an ideal solution? So you can try. So option A, B, C and D are there. So Harshit, you can answer in the chat. या ऑप्शन डी इज करेक्ट हर्षित. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी, सो इट्स नाइदर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. जब डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो होगा वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ़ you're absorbing energy, it is endothermic process, delta H will be greater than 0. If you are giving off energy, delta H will be less than 0. Enthalpy change will be less. H is your enthalpy here. Okay, so you're correct. Okay, so Rajesh got it right.
non-ideal solutions. The solutions which do not obey the Raoult's law over the entire range of concentrations are non-ideal solutions. Okay. So let's see non-ideal solutions क्या होते हैं आपके. Non-ideal solutions with positive deviation. In case of non-ideal solutions positive deviation, the interactions between solute solvent AB is weaker than those of pure components AA और BB. तो इससे क्या होगा आपका जब नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन होगा तो आपका टोटल वेपर प्रेशर P will be greater than P naught plus PB. Okay. P naught plus PB से P naught A sorry P naught A plus P naught B से आपका वेपर प्रेशर टोटल प्रेशर ज़्यादा होता है इस केस में. ठीक है, इसीलिए आपका कर्व ऐसे ऊपर. दिस कर्व रिप्रेजेंट्स योर P naught A plus P naught B. Okay. P naught A plus P naught B. Okay, the values of P naught A plus P naught B. Okay, so if it was following your Raoult's law, so if it was following this equation basically, not P naught A plus P naught B, this won't be the correct thing. It's like if it follows this equation, P equal to P naught A xi A plus P naught B xi B. Okay, this line is following this equation. Okay, so this part is actually wrong. This is not the correct part, this is the correct part. This is your Raoult's law line. Okay, but to follow this it has to also follow two conditions, delta H mix 0, delta V mix also 0, then only you will get this line, but you won't get this line because आपका यहाँ पे क्या होता है, AB's interactions they are weaker than AA or BB. So if your interactions are weaker, what happens, more of the solution, so the solute and solvent particles they can go into the vapor phase, क्योंकि vapor phase liquid में ज़्यादा forces of attraction रहता है. तो अगर आपका forces of attraction कम हो गया, इसका मतलब more vapor like the equilibrium will allow more vapor particles, like particles of both A and B to go into the like your solution like into the vapor phase. Okay, तो इससे क्या होगा आपका ये ऐसे ऊपर एक कर्व आएगा. तो द एक्चुअल कर्व, द P actual will be greater than this. Okay, be greater than this value. ये वैल्यू से ज़्यादा होगा, इसीलिए आप बोलते हो ये पॉजिटिव डेविएशन है. तो if it followed the Raoult's law it would have given you this line, but it does not, so it will give you this line. Okay, so obviously correspondingly you will get also this line. Okay, okay, so if it was ideal it would have followed these lines. Okay, yeah, intermolecular forces between AA and BB are stronger than AB in the case of a positive deviation. That is correct. Okay, that is your correct. Okay, again this equation is for your ideal solution. Okay, this is for your ideal solution. So if it was, if AA and BB they mixed and formed an AB which was ideal solution, you would have got this line. Okay, and this would have been, this straight line would have been for your AA, this straight line for AA, this straight line for BB, and this straight line for this equation. Okay, this is following this equation, but in reality you get a curve which is like this because they show positive deviation. So your pressure will be higher than that of this equation if both of them formed an ideal solution. Okay, so I hope this is clear. Okay, Harshit, I hope this is clear कि अगर A और BB आइडियल सोल्यूशन बनाते तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता, BB का एक स्ट्रेट लाइन आता, फिर AB का भी एक स्ट्रेट लाइन आता. Yeah, this diagram is important. Just remember this diagram. Just remember that in a positive deviation
the total pressure will be greater than that of if both of them formed an ideal mixture. Okay. And in the next slide we'll learn about negative deviation. Just remember this curve. So you need to remember, if it was ideal, the points would have been a straight line, and here it would have been also straight line. Since it is showing positive deviation, आपका कर्व ऐसे एक ऊपर से आएगा, यहाँ पे एक ऊपर से आएगा, तो the values will be greater than that of ideal. Okay, this straight line has to follow this equation. Okay, this equation, if both of them were ideal, but positive deviation actual values will be greater than that of this equation. Okay, so we'll continue. So non-ideal solution with negative deviation. Now it is just the opposite. So again, if both AA and BB, so in non-ideal solution, your what happens? The opposite happens. Your AB interactions, they are stronger than that of AA and BB interactions. Your AB interactions, they are stronger than AA and BB interactions. So what happens? Your solution, in the solution, the particles are held together by stronger forces of attraction. What that so stronger forces means less of the particles go into your vapor phase. Okay, less of the particles will go into the vapor phase. So obviously the total pressure of the solution will reduce than what it would have been if it would have formed the ideal solution. So basically again this line, it follows your P equal to P naught A into xi of A plus P naught B into xi of P, based on Raoult's law for a mixture containing a binary solution of two liquids. Now since your solution is showing a negative deviation, so P actual will be less than this value. It will be less than this value. So you will see the curve will be lower than that straight line, and individual pressures also you will see they are also lower than that of the straight line. Okay, so just the opposite here, but your delta H mix will be less than 0. So it will be an exothermic process. Okay, this is an exothermic process, and your V mix will also be like less than 0. Okay. Okay, it is an exothermic process. This would happen. Yeah, in your non-ideal solution with negative deviation, the AB interactions will be stronger than that of AA or BB. Just if energy will be released. So again, these are experimental values. So you will see that the mixture should become bit hotter. So some heat will be released because delta H is less than 0. That means it is exothermic. So in the positive deviation, the mixture would have become cooler, but in negative deviation the mixture will become hotter. Okay, so that is the difference. Okay, for negative deviation you can give an example of water HCl. Okay, water and HCl mixture, water and HCl mixture, it shows negative deviation. Okay, just see, basically just see this delta H mix. If delta H mix is less than 0, it will be exothermic. Okay, that's your point for now. Again, experimentally you can see that a container containing the solution should become delta V. Delta V is your delta V mix. Okay. Okay. Delta V mix is negative. Okay, because the solution will contract. Okay. So what happens in the case of negative deviation, since the forces are stronger, okay, the volume will it contracts, solution will contract a bit. Okay, so your V final will be less than V initial, or your V of AB will be less than V of A plus V of B. Okay, so obviously if it is less than VA and VB, so if you do a subtraction, VA minus B minus of VA
minus plus Vb. Okay, this value will come negative, so it will be negative value. Okay, so delta V is change in volume. So for a non-ideal solution with negative deviation, the volume will contract. Okay, the opposite happens in the case of positive deviation. Positive deviation, for positive deviation, okay, sorry, this part I did not discuss last slide. For positive deviation, delta H mix will be greater than 0, so it is an endothermic process, and delta V mix will be positive. Okay, V mix is also positive, so the solution expands. Okay, so the solution will have a greater volume than that of your if you kept your individual solute and solvent components. Okay, so I hope it is clear, Harshit, how delta V mix is 0, less than 0. What is delta V mix? Okay, so basically negative deviation, the solution will contract a bit. Okay, so we will go to the next slide. Next slide we have azeotropic mixtures. Azeotropic are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature. So they will have the same composition in liquid and vapor phase. Okay. So last class, so for vapor phase, liquid phase, we have this relation. Okay. So vapor, liquid phase, they follow Raoult's law, right? Okay. So they will have the same composition in your liquid as well as vapor phase. Okay. So mole fraction in liquid phase will be same as the mole fraction in vapor phase, and these mixtures you cannot separate by your these mixtures you cannot separate by fractional distillation. So you guys know कि आप लोग को पढ़े ही होंगे कि दो like liquid mixtures, if the boiling point is very close, like less than 25 degrees Celsius, we used fractional distillation to separate the components, but in certain cases you can't because they behave as azeotropic mixtures. Okay, so okay, okay, remember, I think it is there in the next slide. I hope this part is clear. So azeotropic mixture is related to that like your positive deviation, negative deviation. Okay, so we will see in the next slide what azeotropic mixture and their that parts relation is. Yeah, that water HCl is also an azeotrope. Water and HCl mixture, that is also an azeotrope. So we'll see in the next slide. Okay, like negative deviation, those mixtures, and your positive deviation mixtures, they are actually azeotropes. Type is different, but both of them are azeotropic mixtures. Okay, we will see. So minimum boiling isotope. So you will see minimum boiling isotope is solutions which show large positive deviation from Raoult's law for minimum boiling azeotrope at a specific composition. Okay, so the solution which show a large positive deviation from Raoult's law for minimum boiling azeotrope at a specific composition. So that, okay, okay, at a specific composition they will show this behavior, minimum boiling azeotrope. Okay, and the same for maximum boiling azeotrope. So example, again, minimum boiling azeotrope, you have, so minimum boiling azeotropes are what, your solutions which show positive deviation. Okay, so positive deviation, example, they at a particular composition they will show this property, they will become a minimum boiling azeotrope. Okay, now example you can give is water propyl, so acetaldehyde carbon disulfide mixture. Okay, acetaldehyde carbon disulfide mixtures.
Okay, this is an example. So at a specific composition, it will show a minimum boiling azeotrope. So your acetaldehyde is what? CH3CHO. So CH3CHO and your carbon disulfide CH2. If you mix both of them, you should get a minimum boiling azeotrope at a specific composition. Similarly, water HCl. If you take water and HCl, okay, it should give you a maximum boiling azeotrope at a specific composition. Okay. So I hope Harshit it is clear now what is an azeotrope, types of azeotrope and their examples. Okay, so basically minimum boiling azeotropes, they are the solutions which show positive deviation. Maximum boiling azeotropes, they are the solutions which show your negative deviation at a specific composition. They will form this azeotrope, and example is your CH3CHO, CS2, this one water HCl. Okay. Then you can also know about zeotropes. Okay, zeotropes, what they are? They are I think solutions which change their composition. Okay, solutions. Okay, solutions which change their composition, change their composition upon distillation. Distillation is basically like boiling. So you use distillation to separate mixtures. Okay, so when you boil them, they will separate out. Okay. Okay. So zeotropes are the opposite of azeotropes. Their composition changes. But in the case of azeotropes, they will have the, yeah, zeotropes are opposite to that of azeotropes. Okay. Zeotropes are liquid mixtures which change their composition upon distillation. Okay. But azeotropes, if you make them undergo distillation or boiling, they won't change their composition. Their composition stays same, both in the liquid as well as the vapor phase. But in the case of zeotropes, it changes. Okay, and zeotropes are opposite of azeotropes. Opposite of azeotropes. Okay. So in your course, azeotropes is there, but just know what is zeotrope. Okay. Okay, so I hope Harshit this is clear. So we'll then move on to the next part. Okay, Harshit. So I hope it is clear that your zeotropes are distillation or boiling. Okay, so we'll move forward. Okay, so Harshit, if it is clear, I'll move forward. So you can tell in the chat if it is clear. Did you get what is a zeotrope and its relation to your azeotrope? Okay, if it is clear, I'll move forward. Next slide. Okay, nod, Jord. Okay, so we'll continue. So next, what we have? So a question. So it is sort of like more of a theory, less practice, but we'll do some questions. Okay, Harshit. So try this question, guys. An azeotropic mixture of two liquid has boiling point lower than either of them when it. Okay, azeotropic mixture of two liquids. So you have two liquids. They form an azeotropic mixture. Their boiling point at a specific composition is lower than that either of them. So what is the, will they show any deviation or they won't, or they are just saturated? So these are your four options A, B, C, D. You can type in chat which one you think is correct. Okay, so guys, you can try. So guys, you can answer in your chat. B, mixture of two liquids has boiling point lower than either of them when it is
B is shows no deviation. So your mixture's boiling point is lower than either of them. Okay, so it will show a what? It will show a positive deviation, because in positive deviation vapor pressure will be higher. Remember, a liquid boils, so as you drop it behaves as a single liquid, right? It does not change its composition. So liquid boils at a particular temperature when its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. So a liquid which has a higher vapor pressure will be easier to boil, so it will have a lower boiling point. Opposite will be your negative deviation, it will have a higher boiling point, because it will have total pressure will be lower than that of actual pressure, which is calculated by Raoult's law. Then yeah, option C is correct, shows positive deviation. Okay, shows positive deviation from Raoult's law, correct. Harshit and George. Okay, Rajesh, you can also attempt. Okay, so both of you guys are correct. So we'll continue. Next, what we have, colligative properties. So we'll start our colligative properties today. Okay, colligative properties are basically properties which depend on the number of particles, does not depend on the nature, like chemical nature of particles. It just depends on how many particles are present in the solution. Does not matter what is their chemical nature, what is their structure. It only depends on number. Okay, just the number of particles. If your properties okay depend, then you will tell it to be colligative properties. Okay, for a solution it will be set to its colligative properties. So definition, you can see properties which depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution are called colligative properties. So your base understanding is here is these properties, these colligative properties which you will learn now. So you will learn elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure. Okay, all these things, they only depend on number of particles, don't matter what is the nature of those particles. Okay. So we'll continue. Relative lowering of vapor pressure. So this one actually we have sort of learned before. When you add a non-volatile solute, the vapor pressure reduces. So relative lowering means, relative means you are having a ratio, you are having a fraction, and somehow it is related to something. Okay, that is your relative lowering of vapor pressure. Okay, so relative lowering. So if you make a mixture, okay, PA and PB, if you make, like let's say you put, purpose of colligative properties, so your vapor pressure reduces, so your boiling point might increase, your freezing point can reduce, osmotic pressure is used in reverse osmosis, RO. So you might have seen RO, water purified, so that works based on osmosis. Reverse osmosis is the opposite of osmosis, we'll learn that in the next class. So that entire thing is based on colligative. So they all are clubbed as one into colligative properties, because the value, so each of them will have a specific mathematical value. So that value depends on only the number of particles, not on the nature. So NaCl, what is its nature doesn't matter, how many particles of NaCl are present, that only matters. Okay, so that is the point here. Okay. So like your salt water, so saline water, it boils at a higher temperature. Why? So that explanation you can only give if you understand what is a colligative property. So reason is, salt is a non-volatile solute added to water. It blocks those solvent particles from going into the vapor phase. Because of that blocking, less of the solvent particles go into vapor phase, thus your boiling point increases. Okay, so like these are its properties, they have all been clubbed into one. Okay. So relative lowering. So if you mix a non-volatile solute, okay, if you mix a non-volatile solute, okay, so lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure. So what is lowering of vapor pressure? Pure solvent vapor pressure will be P naught. Okay. Solution's vapor pressure is P. So this lowering P naught minus P, it is proportional to your mole fraction of solute, non-volatile solute.
Here volatile spelling is wrong. Okay, this should be volatile. So P naught minus P is proportional to mole fraction of solute. Okay, so here you can see XB if is the, so if you got A is your solvent, okay, A is your solvent and B is your solute, okay, B is your solute, okay. So we know from Raoult's law, we know this, that PA is equal to P naught A into xi of A, which is vapor pressure of the solution is equal to vapor pressure of the solvent, pure solvent, multiplied by mole fraction of the pure solvent. Okay, when you add a solute, non-volatile solute, the vapor pressure will lower. Okay, so this lowering is proportional to mole fraction of solute. So what happens if you equate it? Okay, this equation. So you can take this down. P naught A you can take down. Okay, so you will get this P by PA by P naught A equal to xi of A. Then if you subtract 1 from both sides, 1 minus PA by P naught A, 1 minus xi of A, 1 minus xi of A, we know xi A plus xi B is equal to 1. So 1 minus xi A will be equal to xi B. Okay, so that only it has been done here. So 1 minus PA by P naught A is equal to xi B. So P naught A minus PA, P naught A minus PA. Okay, so here okay. Okay, here one error is there. This is wrong. Okay, this part is wrong. So if you subtract 1 minus PA by P naught A, okay, you will get P naught A minus PA by P naught A. Okay, so here one error is there. Okay, so I removed it, that error. So your P naught A minus PA by P naught A will be equal to xi B. This P naught A minus PA is your lowering of vapor pressure. Okay, this is your lowering of vapor pressure. Okay, so delta P is your lowering of vapor pressure. So finally you will get actually like this, P naught A minus P divided by P is the okay, pressure of the solution. Okay, because so we are assuming that your solute particles, it is not giving any contribution. Okay, we are just taking the solution's vapor pressure as the total vapor pressure of the solvent's vapor pressure as the total vapor pressure of solution. So Harshit, your doubt is actually cleared here. Okay, RLVP, lowering of, hi Shri Krishna. LVP is basically this. So it's like mathematical term. Lowering means delta. Okay, P naught minus P, there is no difference, they are related. So P naught minus P is your lowering of vapor pressure. If you divide it by a certain quantity, so relation, you make a relation, you make a fraction. So if you divide it by P naught, which is the vapor pressure of the pure solvent, so you will get relative lowering. So this fraction is your relative lowering of vapor pressure. Okay, and Harshit, your doubt few slides back. So in this equation, we are considering like if you add a non-volatile solute, the non-volatile solute does not have any contribution. So PB will be equal to 0. Okay, you had asked me a few slides back what will be the value of PB. So PB's value is 0. Then only we can derive this equation. Okay, so PB's value is 0. We can directly say PA is actually a P. So total vapor pressure of solution when a non-volatile solute is added to it is the vapor pressure provided by the solvent, which is volatile. Okay. Finally, you will get P naught minus PA by PA is equal to xi of B. Xi of B is your mole fraction of the solute. This you can change again. You can give P naught minus P by P naught equal to xi B. Okay.
where P naught is the vapor pressure of pure solvent and P is the vapor pressure of the solution. Okay. So I hope this part is clear. Okay. So when you add a non-volatile solute to a solution, total vapor pressure is only dependent on the vapor pressure given by the remaining solvent particles. Okay, they are solvent particles. The solute particles don't have any contribution. Total pressure is given by your solvent particles. Okay. So guys, Jord, Shri Krishna, Harshit, you guys can say if you understood this equation, P naught A minus PA equal to Xi B by PA. Okay, okay guys, that's good. Okay. So again, this is an assumption. Remember, solids also have certain vapor pressure, but here we are assuming it. This value is so low that we can assume it to be 0 for ease of our calculations. Okay. So guys, you will have to solve a question here. 12 gram of urea dissolved in 1 liter of water and 68.4 gram of sucrose dissolved in 1 liter of water. Okay, urea is your I think CH2 NH2 CO CH NH2 CO NH2 I think. Okay, urea is your NH2 C double bond O NH2. Okay, this is your urea. You have to calculate what here? The relative lowering vapor pressure of urea. So you have to find that ratio, not lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure is the delta. Relative lowering is the ratio. Okay. So, okay. So this is urea. Its atomic mass, molecular mass. Molecular mass is molar mass is 60 gram per mole. Okay. Then you've got your sucrose. Sucrose is C12H22O11. Okay, this is your C12H22O11. Okay. So we know relative lowering of vapor pressure is dependent on mole fraction of solute. So you have to just find the mole fraction of solute. Basically, okay. Okay. Option D. So I'll check that. Option D is equal to that of sucrose. Sucrose is your C12H22O11. Okay, C12H22O11 is your sucrose. Okay, its atomic mass, molecular mass is I think molar mass is 342 gram per mole. 342 gram mole inverse. Okay, so we can also calculate 12 are 144. 144 plus 22 plus O11. 16 into 11 is 176. So if you add it up, 42 is 6 plus 6 12 plus 1 5, 5 plus 2 7, 7 sevens are 14 plus 1. So 342 gram mole inverse. Okay, that is the molar mass. So other guys you can try Sri Krishna, Jord. Okay, try this question. So just remember P naught minus P by P naught, where P naught is the vapor pressure of pure solvent, P is the vapor pressure of solution, is equal to Xi of B, which is your mole fraction of solute. So you have to calculate the mole fraction here of solute. Okay, that is your aim. And also this one, actually you can write this as Na plus Nb divided by Na plus Nb. Okay, if Na, if it's a very dilute solution, if Nb is very less than Na, you can convert it to approximately to Nb by Na. Okay, you can remove the B also from the denominator. Okay, so other guys please give a try. So you have to figure out mole fraction of both urea and sucrose. So whosoever mole fraction will be high, the relative lowering will be more. Okay, question is relative lowering of vapor pressure is urea is, so in terms of sucrose you have to calculate.
Yeah, LBP and RLBP is a colligative property. Like RLBP, relative lowering of vapor pressure, comes from your lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure is basically this part, just the difference, and this ratio is your relative lowering. So relative lowering of vapor pressure is a colligative property. राहुल गिरीश सर की क्लास आपका ट्यूसडे होगा, अब शायद एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ट्यूसडे हमारे नेक्स्ट क्लासेस है सर डी। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ, क्या देखते देखते कौन सा ऑप्शन सही है वैसे। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही दिया है। तो इक्वल टू दैट ऑफ सुक्रो सोल्यूशन, तो एवरी वन गॉट इट राइट, हुएवर आंसर्ड। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं आंसर किया जैसे जॉर्ड राहुल, मैं सॉल्यूशन बोल देता हूँ। तो बेसिकली आपको एक्स बी निकालना था, जिसका एक्स बी ज़्यादा है उसका लोअर रिलेटिव लोअरिंग उतना ज़्यादा होगा। एक्स बी इन द केस ऑफ एक्स ऑफ यूरिया कितना है, सो इट विल बी व्हाट, आपका 12 ग्राम है यहाँ पे, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर इन वाटर। ओके, तो 12 बाई आपका कितना है ये, 12/60। ओके, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, सिंस 1 लीटर वाटर में आई थिंक 55 मोल्स ऑफ वाटर होता है। LVP मतलब LVP का यू कैन से इट इज़ रिलेटेड टू इट, लाइक मतलब वी आर मोर कंसर्न अबाउट रिलेटिव लोअरिंग। ओके, कितना लोअर हुआ, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग का आपका डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है XB से। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपको पता है आपने कितना सल्यूट ऐड किया है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो रिलेटिव लोअरिंग। बट लोअरिंग के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट शायद करना पड़े, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बट एनी वेज इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, मतलब रिलेटिव लोअरिंग बाय कन्वेंशन हम उसको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं, बट दैट इज रिलेटेड टू योर LBP। LBP से आपका RLBP निकलता है। ओके, यू कैन से इट इज़ ऑल्सो इन अ सर्टेन वे। ओके, बेसिकली अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए और एक भी आपको चीज़ चाहिए, वो चीज़ क्या है आपका, की नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इवन दैट इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो गाइज मैं यहाँ पे सेकंड फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, Na/Nb। ओके, तो इस केस में आपका क्या होगा, N ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय N ऑफ वाटर। तो दोनों के केस में N ऑफ वाटर सेम होगा, तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि N ऑफ यूरिया इज़ वेरी वेरी लेस दैन N ऑफ वाटर, क्योंकि 1 लीटर वाटर में आपका 55 मोल्स होता है, बेसिकली 1000 ग्राम्स। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सीसी। तो आपका 1 लीटर में आपका 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml 1000 cc ऑफ वाटर होता है। cc इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर्स, 1 मिलीलीटर, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। तो आपका 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम वाटर में कितना मोल्स ऑफ वाटर होता है, बाई 18, तो यू शुड गेट अराउंड 55.5 आई थिंक। 1000 डिवाइड बाई 18 आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 55.5 मिलना चाहिए। 18 × 5 90, 10 100 55, तो फिर से 90 आया, तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन हो गया शायद, डेसिमल 5, तो अगेन 10, यहाँ पे फिर 10 आएगा, 10 आएगा, फिर 55.5, अप्रोक्सीमेटली 55.5 मोल्स होता है। ठीक है, तो NB का वैल्यू वैसे भी यहाँ पे दोनों के लिए सेम होगा, तो ये मेरा N क्वार्टर ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 1/5, दिस इज कमिंग 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2। और N ऑफ एसिटल सेकेंड क्या था, सुक्रोज, सॉरी जाई ऑफ सुक्रोज। जाई ऑफ सुक्रोज कितना है मेरा, उसमें 68.4, 68.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज विच इज इक्वल टू 342। ओके, डिवाइडेड बाय आपका N ऑफ वाटर। ओके, तो आगे आई थिंक दिस ऑल्सो कम्स एज 0.2, so this is also 0.2। N of water आपका 55 है, if you want to calculate you can calculate, if you don't want to calculate you can just cancel out।
तो एन ऑफ वाटर अगर आप रेशियो इसका फिर एक रेशियो लोगे तो आपका कितना आएगा, जाई ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय जाई ऑफ सुक्रोज, अगर एक रेशियो लोगे यू विल गेट इक्वल टू n of urea, number of moles of urea by n of water divided by again n of sucrose divided by n of water. ओके, तो आपको मिलेगा कितना, इक्वल टू आपको मिलेगा 0.2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो रेशियो 1 है, तो वैल्यू विल बी सेम. एंड यहाँ पे आपका पानी सॉल्वेंट है, वाटर इज योर सॉल्वेंट. ओके, water is your solvent and sucrose and sugar is obviously soluble in water, urea is also soluble, so you can form a solution. Okay guys, so I hope ये solution आपको समझ में आ गया. और ये मैंने कैसे किया, डायरेक्ट मैंने XB को Na by Na plus NB होना चाहिए, तो N of यूरिया बाई N of यूरिया प्लस N of वाटर, बट N of यूरिया यहाँ पे बहुत कम है, मतलब 1 लीटर वाटर में आपका 55.5 मोल्स ऑफ वाटर होता है, जबकि एन ऑफ यूरिया 0.2 है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू इन कंपैरिजन. तो ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैंने उसको हटा दिया. ओके, तो गाइज यू कैन से इन चैट दोज पीपल स्पेशली जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जैसे राहुल या फिर जॉर्ड, तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया, कैसे ऑप्शन डी आपका आंसर हो रहा है. तो मैंने रेशियो निकाल के उसका आंसर 1, रेशियो मेरा 1 है, तो अगर रेशियो 1 आ रहा है मतलब रिलेटिव लोअरिंग मेरा 1 सेम है दोनों के लिए. बोर्ड केमिस्ट्री बुक्स आप एनसीईआरटी कवर करो, और एनसीईआरटी कवर करो, और एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करो. ओके, तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो imbibe.com. ओके, वहाँ पे आपको सब टेस्ट मिल जाएगा. imbibe.com पे जाओ या फिर imbibe के ईपी के एंड्रॉयड ऐप पे जाओ, या एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाके imbibe ऐप डाउनलोड करो, या फिर आप एंड्रॉयड एप्पल प्ले स्टोर पे जाके imbibe ऐप डाउनलोड करो, तो वहाँ पे आपको, हाँ ठीक है, हार्ड होने से ही आपको समझ में आएगा, तो इट विल बी फास्टर. तो 12th स्टैंडर्ड में आप लोग हो तो ये आपके लिए एक चीज़ याद रखना, जब समय कम होता है, लाइक नॉट ज़्यादा कम, लाइक अभी आपका सितंबर अक्टूबर शुरू हो गया, तो आपका एग्ज़ाम फेब मार्च में होगा. प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपके नवंबर दिसंबर में शायद स्टार्ट हो जाएंगे आपके स्कूल्स में, तो आपके पास 1.5 महीना 2 महीना बाकी है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ विच इज़ बिट लेट बट नॉट दैट लेट, बट इफ़ यू स्टार्टेड अर्लियर इट्स बेटर. अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो आपका एग्ज़ाम की तैयारी, तो ट्राई करना कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो थ्योरी के साथ, थ्योरी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरी आएगा. क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट पड़ता है. तो इफ़ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, आई थिंक एवरी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में तो ये होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एक सब्जेक्ट हमेशा डिफिकल्ट पड़ता है. तो जनरली जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट पड़ता है उसका क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आता है, मतलब एग्जाम्पलर से नहीं आता एग्जैक्टली, उसके लेवल का होता है. तो अगर आप लोग उसके लिए प्रिपेयर करके रखे हो तो इट्स बेटर. ओके, हमेशा याद रखना, अगर आप सीबीएसई 12th एग्जाम दे रहे हो, एक आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर साल एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट आएगा. तो मैं जब 12th, तो आई गेव 12th सीबीएसई, मेरे ईयर में फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आया था. हाँ, पीवाईक्यू सॉल्व करो. हाँ, गुड पॉइंट. अगर आपके पास कम समय है प्रिपरेशन के लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए. पीवाईक्यूज में क्या होता है ना, आपका जनरली पूरा चैप्टर कवर हो जाता है इन ऑब्वियसली यू वोंट स्कोर 100 मार्क्स. तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 100 मार्क्स स्कोर करूँगा, वो नहीं होगा. वो आपको डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ ग्रास्पिंग 80-90 तक शायद खींच ले, 70 से 90 के अंदर आपका स्कोर आएगा. पर अगर यू वांट टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स विच इज़ पॉसिबल, मतलब केमिस्ट्री में 100 स्कोर करना पॉसिबल होता है, तो आपको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा. लाइक बिल्डिंग बनाते समय, मतलब देखो, जैसे आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आपके पास कम समय, आप एक टेंट बनाओगे, ठीक है. नाउ टेंट विल डू द जॉब बट इट वोंट बी एज गुड एज अ प्रॉपर हाउस. हाउस बनाने के लिए आपको फाउंडेशन सेट करना पड़ेगा, फाउंडेशन के ऊपर आपको बीम, जो उसका सपोर्ट बीम होता है उसको करना पड़ेगा, फिर आपको
ईटा डाल के उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट, बेटर एक्सपीरियंस, लिविंग एक्सपीरियंस इन दैट हाउस। ओके, सिमिलर एग्जाम में भी आपका पीवाईक्यू आपका टेंट जैसा होता है, काम चला हुआ होता है। लाइक 70 टू 90 स्कोर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ग्रास्पिंग स्पीड। इट माइट रिड्यूस, 60 भी हो सकता है। ठीक है, 60 से 90 आप रेंज ले लो। आपकी ग्रास्पिंग स्पीड कितना है, आप कितना, क्योंकि पीवाईक्यूज आप जो करोगे विदाउट नोइंग मच थ्योरी तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता तो सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उससे ये पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, आप अगर 5-10 साल का पीवाईक्यू करोगे आपको पता चल जाएगा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से चैप्टर में। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करो। आई वुड रिकमेंड कि सीबीएसई तो अभी अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम पास में है, टाइम नहीं है, तो सीबीएसई एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर आपके पास अगर टाइम है, सिलेबस syllabus I will try to finish as much as possible, I'll be honest. ठीक है, actually we need we are getting more faculties in the coming days, so when more faculties will come we will be able to finish faster, so don't worry. So what I will do is अभी के लिए मैं आपका थ्योरी ही चला रहा हूँ, जितना हो सके पढ़ाऊँगा। फिर क्या करूँगा, जैसे ही आपका नवंबर स्टार्ट हो जाएगा मैं बस आपका ये करूँगा, प्रैक्टिस सेशन, एक एक प्रैक्टिस सेशन डाल दूंगा। ठीक है, तो एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन जिसमें बस मैं आपको पीवाईक्यूज दूंगा, तो पीवाईक्यूज से आप लोग सारा कोर्स कवर कर लोगे एज गुड एज पॉसिबल। डोंट वरी, वी विल कवर द कोर्स इन सम वे शेप और फॉर्म। इफ वी आर नॉट एबल टू कवर इन द नॉर्मल वे, वी विल कवर इन अ डिफरेंट वे। ओके, एंड दैट विल ऑल्सो बी वेरी इफेक्टिव। तो आप लोग इसके अलावा हमारा एम्बाई प्लेटफॉर्म यूज़ करो। ओके, तो वहाँ पे आपको सब टेस्ट सीरीज टाइप मिलेगा, क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है एक्चुअली। देखो आप लोग जो पढ़ाई करते हो, दो चीज़ें करना है उससे, अब नॉलेज गेन करना है, मार्क्स भी स्कोर करना है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से एक्चुअली नॉलेज जल्दी ज़्यादा गेन होता है और मार्क्स भी ज़्यादा स्कोर होता है। या लाइक नॉट लाइक वन शॉट, लाइक पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन। हाँ, इट यू कैन से इट इज़ अ वन शॉट। पीवाईक्यू में मैं आपका पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा, तो वो वन शॉट टाइप का ही हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, तो पीवाईक्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर्स वो सॉल्व करवा देंगे। या फिर आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर, आई थिंक एवरी ईयर सीबीएसई रिलीजेस अ सैम्पल पेपर, वो भी डिस्कस करवा देंगे। ओके, तो अदर पीपल जो चैट में है, आई होप जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको समझ आया है कि ये आंसर कैसे आपने सॉल्व किया। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो यहाँ पे दो सल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जिसका ज़्यादा होगा उसका लोअरिंग उतना ज़्यादा, रिलेटिव लोअरिंग उतना ज़्यादा होगा। ओके, so that value P naught minus P by P naught will be greater. So guys, please say if it's clear, then only I'll move on to the next slide. Okay guys, Jord, Rahul, Harshit. So guys, please respond in chat. Okay, so we'll move forward. So another colligative property is elevation of boiling point. Okay, so when does a mixture start boiling? When the solution's vapor pressure will be equal to the atmospheric pressure. So this line you can take it to be 1 atmosphere. Okay, generally at sea level we have this much pressure, 1 atm. Okay, 1 atm is equal to 0.987 into 10 to the power, no sorry, I made an error. Okay, 1 atm is the pressure which we generally experience at sea level. Okay Rudra, hello, welcome to the class. तो आपका पैस्कल के हिसाब से, फिजिक्स में जो आप पैस्कल पढ़ते हो, पैस्कल इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपका 1 बार और एक यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। पास्कल इज नथिंग योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 बार इज इक्वल टू
0.987 atm. Okay, so 10 to the power 5 pascals, 10 to the power 5 pascals is equal to 0.987 atm. ओके, तो पास्कल और एटीएम के बीच ये रिलेशन है. तो सी लेवल पे नॉर्मल कंडीशन पे ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो जब आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करेगा तब आपका बॉइलिंग स्टार्ट होता है. बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी सोल्यूशन व्हेन इट इज इक्वल टू 1 एटीएम. नॉर्म जनरली ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. बेसिकली 1 एटीएम इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल. ओके, तो जब आप लेट से एक कटोरा लोगे, इफ़ यू टेक अ कटोरा, ओके, यू टेक अ कटोरा सॉसपैन, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज, लेट से किचन यूटेंसिल इन विच यू कैन बॉयल समथिंग. ओके, तो इसमें अगर आप एक वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर ले रहे हो, ओके, फिर उसको बॉयल करने को ट्राई करोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा. अगेन रीज़न में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका वेपर प्रेशर घट जाता है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड लाइक योर शुगर. तो वेपर प्रेशर जब घट जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये कर्व आप देख सकते हो फॉर द सेम टेम्परेचर. फॉर द सेम हमें पता है कि टेम्परेचर राइज करने से आपका वेपर प्रेशर बढ़ता है बिकॉज आपका ज़्यादा लिक्विड पार्टिकल्स वो वेपर फेज में जाते हैं बाय गेनिंग दैट एनर्जी विच यू आर प्रोवाइडिंग. तो एनर्जी जितना बढ़ेगा आपका टेम्परेचर उतना बढ़ेगा. आई थिंक आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसको पढ़ा होगा कि टेम्परेचर एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड. ओके, जितना आप एनर्जी दोगे आपका उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो इसीलिए कर्व ऐसा है. प्योर सॉल्वेंट के लिए ये कर्व ऐसा है. ठीक है, जितना आप टेम्परेचर दे रहे हो उसका वेपर प्रेशर उतना बढ़ रहा है एट द पॉइंट जहाँ पे वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है, वहाँ पे आप बोल रहे हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ओके, सिमिलरली सोल्यूशन का हमें पता है कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड. तो इससे क्या होगा, सेम टेम्परेचर. तो आप देखो ये मेरा सेम टेम्परेचर हो गया, तो टी. तो आप देख सकते हो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, लेट्स से वो पी है, पी नॉट है. ठीक है, पी नॉट है और आपका सॉरी पी नॉट ऊपर रहेगा, पी नॉट है और आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी है. तो आप देख सकते हो पी इज़ लेस देन पी नॉट. ओके, तो कर्व में आप देख सकते हो पी इज़ लेस देन पी नॉट. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दोनों का वैल्यू बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर का. तो आपका सॉल्वेंट ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम को टच जल्दी जल्दी करता है एट अ लोअर टेम्परेचर. ओके, जो कि आपका टी नॉट है, टी नॉट. और सोल्यूशन सिंस उसका वैल्यू लोअर है, टू रीच दैट 1 एटीएम इट विल रीच एट अ हायर टेम्परेचर, तो टी बी. तो इससे क्या होगा आपका, इसे आप देख सकते हो आपका बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जो 10th तक पढ़े होगे, बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्ट का ज़्यादा होता है, सॉल्ट इन वाटर सोल्यूशन और शुगर इन वाटर सोल्यूशन दैन नॉर्मल वाटर. उसका रीज़न ये होता है कि 1 एटीएम जहाँ पे वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्योंकि आप लोग जब बॉयल करोगे कोई चीज़, प्रेशर कुकर में अलग होता है क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वाटर बॉयल्स एट अ हायर टेम्परेचर एनीवेज. बट आपका खुले में जब आप कोई चीज़ बॉयल करोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नो इट्स boiling point inversely proportional. I don't think there's a direct relation. Uh, okay. Relation you can just say कि आपका vapor pressure, higher the vapor pressure, higher the vapor pressure. Okay, better term would be higher the vapor pressure. So that means that liquid is more volatile. That means its boiling point is lower. Okay. So inversely proportional से अच्छा है because we don't know like exact mathematical statement we don't know. So for inversely proportional you have to A is inverse proportional to 1 by B. वैसा तो नहीं है, जस्ट याद रखो कि जितना आपका लाइक आई हैव टू चेक.
Okay, I'll check that part anyways. Is there a mathematical relation between boiling point and vapor pressure? Direct mathematical relation where I can say it is inversely proportional. But for now, just remember, higher the vapor pressure, more volatile that liquid is, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही कम होता है, क्योंकि आपका अगर सोर्स ओरिजिनल वेपर प्रेशर ही हाई होता है, तो व्हेन यू हीट दैट लिक्विड इट विल इजीली रीच दिस 180 अगेन अंडर नॉर्मल कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो बॉयल इजीली हो जाता है. ठीक है. सो अदर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड रुद्र प्रताप. ओके गुड. और राहुल, जॉर्ड, बाकी लोग जो ज्वाइन किए थे, आई होप आप लोग का क्लियर है ये वाला पार्ट. ओके गाइस, हाँ, तो अभी देखते हैं इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन भी होता है. ओके, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है आपका? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा टी बी बेसिकली आपका होता है टी बी माइनस टी नॉट बी. ओके, तो इसका एक्सप्रेशन आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में है. ओके, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली आपका इस रिलेशन से दिया जाता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे एम आपका मोलालिटी होता है. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट. तो आपका ये रिलेशन में डेल्टा टी बी होता है, डेल्टा टी बी इज योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो आपका डेल्टा टी बी में रिलेशन कैसे वैल्यू निकालोगे? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम. के बी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, तो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये वाला फॉर्मूला होता है के बी. के बी का भी एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है. के बी का फॉर्मूला होता है, आप के बी भी निकाल सकते हो. के बी का फॉर्मूला होता है के बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल वी. ओके, सो आर्या, आप बोल सकते हो विच पार्ट यू वांट मी टू एक्सप्लेन. तो ये तो फॉर्मूला था, प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट. ओके, सो विच पार्ट आर्या आपको समझना है वो आप बोल सकते हो. तो मैं ब्रीफली समझाऊंगा बिकॉज लास्ट स्लाइड में बहुत लाइक डेप्थ में मैंने समझाया था, टाइम अलाउ नहीं करेगा इतना एक्सप्लेन करने के लिए. तो आप बोल सकते हो कौन सा पार्ट आपको फिर से समझना है. अदर पीपल, हर्षित, रुद्र, आई होप आपको समझ आ गया कि डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? के बी इंटू एम. एम इज़ योर मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ द सल्यूट. एम इज़ योर मोलालिटी ऑफ सल्यूट. ओके, M is your molality of solute, Kb is your molar elevation constant or ebullioscopic constant, delta Tb is your elevation in boiling point.
guys, you can say in chat if you got it. हेलो प्रैंक्स गाइज, प्लीज रेस्पॉन्ड अगर आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, देन ओनली आई विल एक्सप्लेन लेटर। बिकॉज तो एम आपका मोलालिटी ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड किया है वो सोल्यूशन में, उसका मोलालिटी है। मोलालिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके ओके, सो गाइज प्लीज रेस्पॉन्ड अगर आपको ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया। मॉलिकुलर, इसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करूंगा मॉलिकुलर मास ऑफ अ सोल्यूट थ्रू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये उसका, ये इक्वेशन को यूज़ करके आप एक्चुअली मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली आप अगर सॉल्वेंट एक्सपेरिमेंटली आपने उसका प्रेशर निकाल दिया, वेपर प्रेशर निकाल दिया, फिर आप जब सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो जितना आपका वेपर प्रेशर नहीं, आपका बॉइलिंग पॉइंट आपने प्योर सॉल्वेंट का निकाल दिया, फिर आप सॉल्यूट ऐड करके एक्सपेरिमेंट करोगे कि आ, कितना मेरा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्यों आप निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट से निकाल सकते हो एक्चुअली। ये जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एम सोल्यूट ले लो इसको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ले लो, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, ये स्मॉल एम सॉल्वेंट इन केजी। ओके प्रैंक्स, बाय बाय गाइस, प्लीज रेस्पॉन्ड। हर्षित, रुद्र। ओके, तो ये वाला डेरिवेशन वही बोल रहा है एक्चुअली। देखो के बी आप जब निकालोगे, ठीक है, तो आपका मोलालिटी क्या होता है। अगर आप W2 को लाइक W1 इज मास ऑफ सोल्यूट, ओके, W1 इज मास ऑफ सोल्यूट, ओके, एंड W2 इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है, तो हियर अगेन देयर इज अ यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो भाई आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसको फिर यहाँ पे डालोगे, तो आप बोल सकते हो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। के बी का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो वैल्यू डाल के। यहाँ पे आपका टी होता है क्या, ओके, टी आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया, यहाँ पे टी होता है, टी आपका होता है, टी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, टी आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। आर आपका होता है गैस कांस्टेंट, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है, और एल वी आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। तो ये आपके तीन क्वांटिटीज होते हैं यहाँ पे, ओके। तो उसको आप निकाल सकते हो, तो के बी आप निकाल सकते हो फाइंड करके, ओके। तो आप डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। आपको W2 पता होता है क्योंकि आप, आपके जो केमिस्ट्री लैब में होता है जो एनालिटिकल बैलेंस या डिजिटल वेट मशीन, उससे आप W2 निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको W1 भी पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता है, वही एनालिटिकल मशीन लेके केजी में आप निकाल सकते हो W1 का वैल्यू कितना है। अब M2 इज़ द ओनली वेरिएबल हियर। M2 आपका है मोलर मास ऑफ सोल्यूट,
molar mass of solute. Okay. Okay. Better term here would be molar mass, not molecular mass, because not all molecules you can calculate. Molar mass of solute. Okay. So जस्ट आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा आपका. Okay. इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, और मोलालिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके, तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपका मोलालिटी है. तो इसको यूज़ करके आप आपका ये निकाल सकते हो, क्या, ये वैल्यू. ओके, तो आपको मोलर मास ऑफ सल्यूट मिल सकता है आपको ऐसे. ठीक है, तो गाइज प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट इफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, then how you can calculate molar mass of solute using this elevation of boiling point. ठीक है, ये दोनों interrelated है. and Kb which is your ebullioscopic constant और your molar elevation constant, उसका भी एक फॉर्मूला होता है RT square by 1000 into LV, where R is your gas constant, T is your boiling point of solvent, LB is your latent heat of vaporization. हम लोगों ने पढ़ा है पहले latent heat of vaporization क्या है. तो ये सब, और आपके क्वेश्चन में बोर्ड लेवल पे आपको कभी हमेशा के बी का वैल्यू देंगे. ओके, बट जस्ट रिमेंबर इट. ओके, के बी स्टिल उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप रिमेंबर करो. इसका और एक भी फॉर्मूला होता है. ओके हितांश, ओके, के बी का और एक भी फॉर्मूला होता है जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में है. उसका फॉर्मूला होता है आर इन टू. ओके, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाता हूँ. ओके, के बी का नेक्स्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो. वैसे एनसीईआरटी बुक में थोड़ा अलग वे में सेम फॉर्मूला को दिया गया है. ठीक है, तो गाइज विल बी एंडिंग योर क्लास हियर. ओके, तो आज मैंने कुछ प्रैक्टिस किया पर ज़्यादा थ्योरी पढ़ा, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना आपका थ्योरी में कवर कर सकूँ 12th स्टैंडर्ड के लिए. तो डोंट वरी, एज एक स्टूडेंट अभी पॉइंट आउट किए कि शायद सारा कोर्स ना कंप्लीट हो पाए इन द नॉर्मल वे. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपका नवंबर स्टार्ट होगा, वन शॉट करूँगा. वन शॉट नॉट इन द टाइप थ्योरी, मैं PYQs के हिसाब से जाऊँगा. फर्स्ट चैप्टर का एक PYQ ले लिया, सेकंड चैप्टर का PYQ, 12th का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर. तो ऐसे करके आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आपके जितने चैप्टर्स है वो मैं कवर कर लूँगा. ठीक है, तो गाइज विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे एट 11 AM. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and please subscribe to our channel and click on the bell notification icon. Okay, and we'll meet again on next Saturday. We'll learn first about this, another formula of Kb, depression of freezing point, osmotic pressure, reverse osmosis and Bantoff factor. तो ये concept आपके बच्चे हैं, तो next class में ये chapter cover हो जाएगा, complete हो जाएगा. Thank you guys for attending the class. Keep imbibing. We believe in you.